ये हमने बात कर ली है कि फायर स्टार्टेड मॉस्क तो इसकी अरबिक बनती है في 21 أغسطس عام 1969 اندلع حريق في المسجد الأقصى في القدس، ووصف أمين الحسيني المفتي السابق للقدس الحريق بأنه جريمة يهودية، ودعا إلى عقد قمة لجميع رؤساء الدول الإسلامية. الحريق الذي دمر جزءا من السقف الخشبي القديم ومنبرا عمره 800 عام. ठीक है, यहाँ तक था. On 25th September 1969, an Islamic conference, a summit of representatives of 24 Muslim majority countries, most representatives who were heads of state, was held in Rabat, Morocco. A resolution was passed stating Muslim governments would consult with a view to promoting among themselves. पहले इसको कर लेते हैं. وفي عام 25 سبتمبر 1969 عقد مؤتمر إسلامي وقمة لممثلي 24 دولة ذات أغلبية مسلمة. معظم الممثلين كانوا رؤساء دول في الرباط بالمغرب، وتم تمرير قرار ينص على ستتشاور الحكومة على Muslim governments would consult with a view to promoting among themselves close cooperation and mutual assistance in the economic, scientific, cultural and spiritual fields inspired by the immortal teachings of Islam. ستتشاور الحكومات الإسلامية فيما بينها بهدف تعزيز التعاون الوثيق والمساعدة المتبادلة في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والروحية مستوحاة من تعاليم الإسلام الخالدة. ठीक है, आगे जो बेटा नेक्स्ट है वो अल्लामा इकबाल पर है. अगेन इट्स फ्रॉम इंग्लिश टू अरबिक. Allama Iqbal was a famous poet, philosopher and thinker from Pakistan. كان علامة إقبال شاعر وفيلسوف ومفكر مشهور من باكستان. Born on November 9, 1877, ولد في 9 نوفمبر عام 1877. He is known as the national poet of Pakistan. يعرف بالشعر الوطني لباكستان because his poetry inspired people to work towards independence. لأن شعره ألهم الناس للعمل من أجل الاستقلال. He also loved writing poems for children. كما حب كتابة القصائد للأطفال and believed they were the future leaders. وكان يعتقد أنهم قادة المستقبل. ठीक है, Allama Iqbal was a talented poet who wrote beautiful poems, especially for children. He loved to tell stories through his verses and he taught everyone to be kind and helpful. كان دائما مهتما بأفكار. كان علامة إقبال شاعرا موهوبا يكتب قصائد جميلة خاصة للأطفال. كان يحب رواية القصص من خلال أبياته وعلم الجميع يكونوا طيبين ومفيدين. حتى كتب كتابا خاصا يدعى بالكياغي. ठीक है, everyone to be he even wrote a special book called Bangidara with a section just for poems for children. يدعى بانجدرا يحتوي على قسم مخصص لقصائد الأطفال. He was always concerned about the thoughts, ideas and condition of Muslims everywhere, especially Indian Muslims who were under British rule and threatened by the Hindu ruling population. كان دائما مهتما بأفكار وأحوال المسلمين في كل مكان، ولكن خاصة المسلمين الهنود الذين كانوا تحت الحكم البريطاني. Iqbal believed strongly in two-nation theory, that Muslims and Hindus were two separate nations and should be allowed to live separately. آمن إقبال بقوة بنظرية الأمتين التي تقول أن المسلمين والهندوس أمتان منفصلتان ويجب أن يسمح لهما بالعيش بشكل منفصل. He put forward this idea again in his famous Allahabad address to the Muslim League. طرح هذه الفكرة مرة أخرى في خطابه الشهير في इलाहाबाद. ये बेटा इलाहाबाद ऐसे नहीं अरबी में आएगा. दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. अब ऊपर भी मैं भूल गई हूँ क्या मैंने आपको कहा था कि रॉन्ग है. He was very popular among the Muslim masses too. أما رابطة المسلمين عام 1900 in year 1930 and preached this in his poem and lectures. ودعا إليها في قصائده ومحاضراته. He was very popular amongst the Muslim masses too. كان محبوب جدا بين الجماهير المسلمة أيضا. तो ये बेटा इलाहाबाद जो है ना ये इस तरह लिखा जाएगा. मैं अभी ही लिख देती हूँ आपको, और वो पिछला मुझे बिल्कुल नहीं याद रहा कि what was that. यहाँ इलाहा ऐसे कर लो, छोटी अलिफ डाल लीजिएगा इलाहा.
आबाद। ठीक है, और हाँ वो लाइन आपकी उल्टी थी, वो ठीक करनी थी साइड वाली। ठीक है, वो भी मैं करके ना तो आपको ये फाइल सेंड कर दूँगी। For now let's delete this one. So अभी बेटा एक और टेक्स्ट है, visit a friend. Yesterday I visited my friend Ali in Sheikhupura. أمس زرت صديقي علي في شيخوبورا. We went to a local park and enjoyed the fresh air. ذهبنا إلى حديقة محلية واستمتعنا بالهواء النقي. We spoke about our upcoming plans for the summer. تحدث عن خططنا القادمة للصيف. We spoke about our upcoming plans of the summer, and then we decided to have lunch at nearby restaurant. ثم قررنا تناول الغداء في مطعم قريب. The restaurant served delicious Pakistani food. قدم المطعم طعاما باكستانيا لذيذا, and we ate until we were full. وأكلنا حتى شبعنا. After lunch, بعد الغداء, we walked around the city. مشينا في أنحاء المدينة. And I bought a few souvenirs. واشتريت بعض التذكارات. It was a wonderful day. كان يوما رائعا, and I looked forward to seeing Ali again soon. وأتطلع إلى رؤية علي مرة أخرى قريبا. اللعب في المطر. في يوم ممطر. اللعب في المطر, playing in the rain. في يوم ممطر, one rainy day. خرج الأطفال إلى الحديقة ليلعبوا. The children went out to the park to play. قفزوا في الماء وضحكوا كثيرا. They jumped in the water and laughed a lot. قال أحدهم, one of them said, كان المطر خفيف والسماء غائمة. The rain was light and the sky was cloudy. اللعب في المطر مسل جدا. Playing in the rain is so much fun. وعندما عادوا, when they returned, غيروا ملابسهم وشربوا شاي دافئا. They changed their clothes and drank warm tea. By this बेटा आपका कोर्स जो है वाइंड अप हो गया. This is all. और आपसे मैंने आपको पास्ट पेपर्स करवाने हैं रिवाइज, और वो भी अब हम कर ही लेते हैं. ये इनमें कोई भी चीज़ नहीं है जो आपने ऊपर नहीं, मैंने आपको करवा दी. इस डॉक्यूमेंट में एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट. ठीक है, और ट्रांसलेशंस अगेन मैंने यहाँ पे दे दी हुई हैं. सो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल्दो ये सारी ट्रांसलेशंस भी ऊपर प्रेजेंट है. और बाकी ईडियम्स के तो टेबल है, वहाँ से ले लेंगे. और ये सेकंड पेपर है जो आपका सॉल्व कर दिया हुआ. दिस इज़ हाउ योर पेपर कम्स. और बेटा कुछ पैटर्न इसका इस तरह के ईडियम्स और प्रोवर्ब्स आपको इनिशियली आते हैं, लाइक अराउंड 15 जो कि 30 मार्क्स के. सो इसका बहुत मेजर चंक है मार्क्स का. उसके बाद आपके लिए पैसेजेस होते हैं 2, जो कि आपने इंग्लिश टू अरबिक करने होते हैं, और 2 होते हैं जो आपने अरबिक टू इंग्लिश करने होते हैं. या समटाइम वाइस वर्सा एक होता है, या वाइस वर्सा भी समटाइम हो जाता है. 2 अरबिक के हो जाते हैं टू इंग्लिश एंड 1 फ्रॉम इंग्लिश टू अरबिक. ठीक है, जैसे ये देखें ऊपर वाला पेपर, इसमें 2 अरबी के दे दिए 30 नंबर के जो कि आपने इंग्लिश में करने हैं, और 1 सिंगल दे दिया इंग्लिश में जो अरबी में करना है. सो इन कम्युलेटिव अराउंड आपका 45 मार्क्स का ये पार्ट होता है. आइदर आपको 2 पैसेजेस आ जाएंगे अरबिक टू इंग्लिश और इंग्लिश टू अरबिक, और एक आ जाएगा फिर वाइस वर्सा इंग्लिश टू अरबिक या अरबिक टू इंग्लिश. आई होप इट्स क्लियर, एंड बाय दिस योर कोर्स इज़ वाइंड अप.